2025 disbursal growth with estimates to 0% year-on-year from 37% earlier. Goldman Sachs now expects Paytm's net income to turn positive only in 2025-2026, a year later than previously expected, owing to the slow revenue growth that they now are anticipating. What has Jefferies said? Jefferies has maintained a buy rating on Paytm, but they have again significantly cut the target price of Paytm. From 1,300 rupees earlier, they now expect that only 1,050 rupees should be the target price of Paytm. They also expect that BNPL disbursals will halve. At no time in our history have the people of India so empathetically demonstrated their confidence and faith in a leader as they did for Modi ji in the recent round of elections. Honorable Chief Minister, your determination to make Uttarakhand a socio-economic powerhouse in paving the way for a growing number of business houses to invest in the state and the Adani Group is privileged to be one of them. Currently, our presence in Uttarakhand spans city gas distribution and cement manufacturing. Through IOAGPL, our joint venture between Indian Oil and Adani Total Gas, we are providing natural gas to all consumer segments, including domestic, industrial, and commercial. Also, to facilitate the transition to have 15% natural gas in India's energy mix by 2030, we propose to convert 200 state buses to environmentally friendly CNG buses, thus contributing to keeping Uttarakhand the way it is now, green and clean. In the cement sector, we will invest in excess of 1,700 crores to expand our Ambuja Cements existing capacity in Uttarakhand. We will invest 300 crores to take our Roorkee plant capacity from the present 1.2 million tons to 3 million tons per annum, and we also plan to invest 1,400 crores to set up a grinding unit with a capacity of 4 million tons, and we expect this will create around 6,000 direct and indirect employment opportunities in the Rishikesh, Dehradun area. In the Kumaon region, we have taken up a project of over 800 crores to install smart meters for the Uttarakhand Power Corporation, in line with the Government of India's plan to replace conventional electric meters with the smart prepaid meters. We are also exploring the development of a 1,000-acre land parcel in Pantnagar. The possibilities include infrastructure for an aerocity, an inland container depot, logistics, warehousing, and a knowledge park. Honorable Chief Minister, we are only getting started. The Adani Group is excited by the great range of investment opportunities now emerging in Uttarakhand. In parallel, power distribution, digital services, roads and highways, multimodal logistics, renewable energy, and much more. Our ongoing projects here are just the first step in building long-term relationship of trust and progress with Uttarakhand. On behalf of the Adani Group, I thank you, Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister, for the inspiration, guidance, and support that you are providing as we do our humble bit to help write the Uttarakhand and the Indian growth story. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for sharing your vision and your commitment towards contributing towards a climate-sensitive, clean, green growth of Uttarakhand. और अब आमंत्रित हैं श्री सज्जन जिंदल जी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर JSW। देवी सज्जनों, राज्य सरकार द्वारा देश की पहली
पंप स्टोरेज नीति तैयार की गई है, जिसमें विकासकर्ता द्वारा स्वयं परियोजना स्थल का चयन किया जाता है और विभाग सीधे विकासकर्ता को परियोजना निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। इस क्षेत्र में अपने निवेश परियोजनाओं पर वक्तव्य दिए जाने हेतु अब आमंत्रित हैं श्री सज्जन जिंदल जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देवभूमि उत्तराखंड के राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर धामी जी एवं सभी अधिकारीगण, ऑल एक्सीलेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यहाँ आए उद्योग जगत के मेरे साथी भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें हम एक युग पुरुष मानते हैं, उन्हें उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य दिन बल्कि वर्ष यहाँ व्यक्तिगत रूप से यहाँ व्यतीत किए हैं। मैं यह बात केदारनाथ और बद्रीनाथ प्रोजेक्ट्स में अपने व्यक्तिगत अनुभवों के कारण कह रहा हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे कर्मठ प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने हमारे महान देश की काया पलट कर दी है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला था, तब भारत की जो जीडीपी थी वो मात्र $2 ट्रिलियन की थी, जिसे प्राप्त करने में हमारे देश को 65-67 वर्ष लगे थे। आज केवल 10 साल से भी कम कार्यकाल संभालने के बाद भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन से भी ज़्यादा तेजी से ऊपर जा रही है। मतलब कि 2 गुना जीडीपी केवल 10 साल में हुई, जो हम लोगों ने 65-67 साल में हासिल की थी। और हम बहुत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। यह सब केवल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का कमाल है कि हम इतनी तेजी से बढ़ पा रहे हैं। जैसे हम उद्योगपति अपने उद्योगों को आगे बढ़ाते हैं, पुश करते हैं, उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नेतृत्व में हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी वाले देश को आगे बढ़ाना कोई साधारण कार्य नहीं है, और यह केवल नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। यह हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे देश को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर चला दिया है। उद्योग जगत के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के पुराने मंदिरों और तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार करते हुए उन्हें तंग गलियों से निकालकर महान दार्शनिक स्थलों में परिवर्तित कर दिया है। आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी ये याद करेगी कि किसी समय एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने पूरे देश का कार्यकल्प किया था और जिनका लक्ष्य हमारे महान राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का था। आज देवभूमि उत्तराखंड में मुझे यह घोषणा करते हुए भी बहुत खुशी हो रही है कि JSW एनर्जी ने हाल ही में नई दिल्ली में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के मौजूदगी में उत्तराखंड सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर दिया है। इस MOU के तहत 5 या 6 सालों में JSW द्वारा 1500 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज विकसित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और करीब 1000 से भी ज़्यादा लोगों का रोजगार डायरेक्टली मिलेगा।
इसके अलावा हाल ही में हमने उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर JSW फाउंडेशन के सपोर्ट से प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ये प्रोजेक्ट केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में और उस केदार नगरी के अंदर किया गया है और इसका नाम हम लोगों ने क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट के द्वारा एक बदलाव लाने की कोशिश करने की है। रोजाना केदारनाथ में काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का उत्पादन का एक वेस्ट जनरेट होता है, क्योंकि जो तीर्थयात्री आते हैं वो पानी की बोतल और प्लास्टिक वगैरह यूज़ करते हैं और वहीं पर फेंक देते हैं। तो जो तीर्थयात्री क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट के सिस्टम के अंतर्गत दुकानों से यूनिक QR कोड वाली प्लास्टिक बोतल खरीदते हैं, उन्हें खाली बोतल वेंडिंग मशीन में जमा कराने पर 10 रुपया UPI या कैश द्वारा रिफंड किया जाएगा। क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट नवंबर महीने से शुरू कर दिया गया है इसी साल, और इसके लिए जो भी स्टाफ वगैरह जो भी क्लीनिंग करने के लोग थे, केदारनाथ में इस प्रोजेक्ट के सफल इम्प्लीमेंटेशन पर हम इसे अन्य धार्मिक स्थानों पर भी विस्तारित करेंगे जो अलग अलग देश के अलग अलग जगह पर है। तो इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर प्लास्टिक का जो गार्बेज है, जितना भी वेस्ट है, उसको इकट्ठा कर सकेंगे और यूज़ कर सकेंगे। अंत में मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और प्रधानमंत्री जी को भी ये आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ हर कार्य में आपके साथ हैं, और जैसे भी आपकी आज्ञा होगी, जैसे भी आपकी डायरेक्शन होगी, हम उसके हिसाब से देश को आगे बढ़ाने में आपके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आश्वासन के लिए, उत्तराखंड के प्रति आपके कमिटमेंट के लिए। और अब आमंत्रित हैं श्री संजीव पुरी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ITC। राज्य सरकार द्वारा वृहद क्षेत्र के उद्यमियों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु कस्टमाइज पैकेज नीति तैयार की गई है, जो देश में अपनी तरह की अद्वितीय नीति है। नीति के अंतर्गत उद्यमी एवं सरकार के शीर्ष अधिकारी चर्चा कर बनी सहमति के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन अनुमेय करते हैं। इस नीति के अंतर्गत राज्य में अपने निवेश परियोजनाओं पर वक्तव्य दिए जाने हेतु आमंत्रित हैं श्री संजीव पुरी जी। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Governor Shri Gurmeet Singh ji, Honorable Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami ji, distinguished guests, ladies, gentlemen, colleagues from the industry. First of all, may I thank the government for this privilege and the opportunity to attend this summit and to share my perspectives. And coming to Dehradun is special for me because I did part of my education here. We're meeting today just after India's remarkable success at the leadership of G20. Honorable Prime Minister, your vision as a global statesman and your stewardship of the cause of Global South has indeed provided a new thought process to the global community and brought immense respect and stature to India. This, together with the slew of purposeful policy interventions over several years, have repositioned India as a beacon of hope and promise in a world which is faced by multi-dimensional challenges. The testimony of the impact of all these initiatives is extremely visible with the transformation in many sectors of the economy, and the GDP numbers speak for themselves. India is indeed the fastest growing economy in the world, and this is seen
because of all the policy interventions and the potential of India, this is seen as India's decade. Some even call it India's century. And India is now seen as a hub for global manufacturing, for global services exports, besides the immense opportunity in the growing consumer market within India. And all of these policy interventions are indeed immensely inspiring and encouraging for us in the business community, and inspire us to do even more towards the economic progress of the nation. Honorable Chief Minister, may I also congratulate you for your dynamic leadership, boundless energy and passion in ushering in a new dimension of socio-economic progress in the state. The strong Uttarakhand mission, envisioning doubling of GDP in 5 years, is indeed very encouraging. I think your investor-friendly policies, the 27 tailor-made sector policies, are indeed extremely encouraging to businesses. ITC is privileged to have been associated with the state for a long period of time, and we have a growing presence across all the three sectors: agriculture, manufacturing and services. Haridwar houses our manufacturing complex, which we have 3 manufacturing facilities for 3 of our businesses: the foods business, the personal care business and the packaging business. And our experience of doing business has been very productive. We have received immense support and cooperation from all the officials from the government, and it has been indeed a very, very fulfilling journey. Uttarakhand is blessed with immense tourism assets: wildlife, pilgrimages, pristine rivers, scenic hill stations, and we are accordingly we have 9 of our hotel properties in Uttarakhand under Welcome Hotel, Welcome Heritage and Fortune brands, and in the near future we will be adding 4 more properties. In addition to that, we have a growing presence in the agriculture sector. We are working with farmers in the horticulture sector, both vegetables and the fruits value chains, and we are supporting the development for our own food products, whether it's the juices or the farmland frozen vegetables, and we'll continue to expand this engagement over time. Encouraged by our experience of working in Uttarakhand, the investor-friendly policies, we are now intending to put up a very large-scale investment in the state of Uttarakhand. The center of gravity of our paperboard business so far lies in Bhadrachalam in Telangana, where we have been there for 4 decades. It's our largest site. The site is today saturated, and we are now looking for another mega site to fuel our growth for the next couple of decades. And I'm happy to say that we intend to put this facility in Uttarakhand. Besides the investor-friendly policies, I think what is very important, it provides the opportunities for a green manufacturing, which is the need of the greed of the hour because of the sources of renewable power. Our investment in this facility, which will be an integrated pulp mill, is estimated to be about 4,000 crores. And this site, of course, has the potential to triple capacity over a long-term period, because this site is something that will see continued investment for more than a decade as we build the subsequent phases of development. But what is more important to us as we envision this facility is our commitment to sustainable and inclusive growth. We are going to create what we have done in Bhadrachalam, an integrated forest to paper value chain. The forest value chain is going to provide enormous employment. It will sequester a lot of carbon. Just as a data point, around Bhadrachalam we have greened 1 million acres, and this has provided 190 million person days of employment and contributed to making ITC a carbon positive company for nearly 2 decades. And we intend to bring in our technology, we intend to bring in our best practices here,
and create that value chain. That piece of it, I think, is what is more important to us, because that will add a lot more to the economy and to the people of Uttarakhand. Honorable Chief Minister, I once again like to compliment you for the investor-friendly policies,